Guys, we'll start in 2 minutes, waiting for others to join. Okay, guys, we'll start now. I think we do not have enough people today, but still, we'll wait for a minute or so and then we'll start with the new topic. Before that, anyone has any questions related to availability set or availability zone or anything from the day one who have been joining and guys who have watched videos? So do you guys have any doubt, any issues with related to VNet or RBAC, anything? Because yesterday I felt that you guys were not that comfortable with VNet topic, though we have covered it already. So just wanted to check with you guys if you are comfortable. Do you want me to repeat the topic or do you want to cover do it again and ask some questions? Yes, guys, anyone has any doubts? I hope you guys know that we have saved the syllabus in our drive. There you can check and you can check how many topics we have planned and how many we have covered yet. So out of those, if you guys have any questions, please ask. If not, then we'll start with compute today. In compute, we have already covered availability set, availability zone, load balancer we'll cover later. Though I have already given you a fair idea what is a load balancer, but we'll do that later. As of now, we will be learning compute services. In compute, specifically, we will be focusing on virtual machine. So before I start, guys, anyone has any doubt? Did anyone, by the way, try to log in and try to create some resource? Anyone did that? Jafar bhai, do you have any questions? Are you practicing? I don't have any questions right now. Not as of now. So I hope you are practicing. हाँ भाई. Sumaya, what about you? Do you get enough time to practice? Are you practicing these things? Do you log into portal? Because guys, I have been repeating this, and unless you go to portal and you log in to yourself and uh, use some clicks, try to create some resource, you will not understand it well. So looking at the balance, I see many people are not practicing. I mean, it gives the clear picture if most of you would be practicing. ये थोड़ा थोड़ा balance कम होता रहेगा यहाँ पर. But I think you guys are not practicing. So guys, I'm repeating again. Trust me on this. Only these sessions are not going to help. If you have that in your mind that I can't find all resource option on left panel. Is this the one you're talking about? You can't find this one? Is that you're saying? Here you can find all resources. So I'm not sure what exactly do you see. If you are here,
what do you say? Could you share a screenshot with me, or maybe you can share your screen so others can also see if you are not able to. These are the favorites, and these are the this is the other menu, and maybe it is like this. Try to uh, extend this. These are the two options. It's to hide and this is to show. So if it looks like this, you still have all services here. This is the icon, and if not, then try to extend this. I have created a free trial. So were you able to do that, Henty, with your credit card? Yes, I just did it now. Great. Last time I wasn't. You weren't able to. Last time I had an issue. Actually, the account which we created with the old one, I guess it got activated as a default domain, default Okay. directory, Right, and the right. new account I created got attached to that. Okay. So it showed me as not eligible. Great. So you figured it out, right? That's nice. Yeah, I created something new with new email ID. Okay, though we could have done the same with your existing ID, but that's okay. As far as you figured it out, that is fine. And yes, now if anyone is asking for access, I'll do that to your account. I should give it to your account. I'm Okay. sending you my ID. You could send a subscription. Let me send it to you. So if anyone is asking, I could help them with getting the access on your subscription. So this is the ID. Send me an invitation or add me as a user directly. You found that option. You found the all resources option, right, Sana? Great. Yes. Right. So I've sent it to you, Henti. You add me there and you make me a contributor or owner at subscription level. So then I can manage for others at resource group level. Right. Okay. We'll do that. So guys, let's start. We have already waited for 10 minutes now. I think no more people are joining. It's 11 people we have. Let's start with this. We are talking about compute service. So here I go, and if I check all services, in this we are talking about compute services. I've already told you that there are many services in compute, but we are not going to learn all of them. Function app we will learn later. Virtual machine classic, ignore it. Virtual machine scale set, very important topic we are going to learn. Disk, very important topic we have to learn, no option. Availability sets, yes, we have already seen this, right? So if you want to create what we saw, that if we have to create an availability set, we created that while creating a virtual machine. But if you want to create an availability set separately before creating a virtual machine, from here you can do that. Could someone could anyone give me an example in which case will you create an availability set first and later on you'll create the machine? What would be the business scenario in your mind? See, I have told you that cloud पे हमारा ज्यादा काम ये होगा कि या तो कोई न्यू ऑनबोर्डिंग क्लाइंट है जो न्यूली पूरा अपना स्क्रैच से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, या कोई ये जो माइग्रेट कर रहा है अपने एग्जिस्टिंग सर्वर्स, वहां पे 12 सर्वर्स चल रहे हैं, उनको बंद करके मुझको यहाँ पर लेकर आना है. ठीक है. In that one, let's say कि वहां पर एक एग्जांपल एक सोल्यूशन था that you should use availability set. So which of the scenario you will create availability set? Migration के वक्त आप availability set को पहले बनाओगे, पहले से बना के रखोगे and then सिर्फ virtual machines को लाओगे, या एक new onboarding के वक्त? Which one is the crucial you think? कौन सा ऐसा है जिसमें आपके पास limited time होगा, limited window होगा, नया वाला या migration वाला? Migration, right? And also, if you are using CLI, it will be better to create the availability set first and deploy a machine, create machine. Right. I will not combine the CLI concept here, but that is okay. You use it CLI or portal, it's one and same thing. But yes, migration. तो migration का क्या मतलब होता है guys? That I have 10 machines already running. मतलब मेरा एक application already है जिसको लोग use कर रहे हैं. तो उसको मुझको वहां से हटा के क्लाउड पे लेकर आना है. मतलब स्लाइटेस्ट डाउन टाइम तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि वहां पर मैं शट डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पर न्यू मशीन्स ऑन कर रहा हूँ सेम सर्विस के लिए. मतलब कुछ ना कुछ तो डाउन टाइम होगा ही. तो वैसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मशीन के अलावा पहले बनाई जा सकती है,
दैट कुड बी अ वर्चुअल नेटवर्क और एनीथिंग, इन सबको पहले बनाकर रखते हैं और लास्ट में सिर्फ वर्चुअल मशीन लेकर आते हैं ताकि कम से कम डाउन टाइम हो, बट विल सी दैट इन डिटेल. So that's fine even if you don't understand it now. So this is how an availability set can be created from here. It is a part of compute service, but we have seen that already, so we are not talking about compute availability set anymore. So let's talk about virtual machine now. Who could tell me a definition of virtual machine? I'm not sure if I have it here. Let me see, but you guys could tell me what is a virtual machine. Yes guys, what is a virtual machine? Yes, that is correct. Virtual machines or VM is one of the several types of on-demand scalable computing resource that Azure offers. This is a very technical definition, एक Microsoft की site वाला definition, but this is right answer. Still, I want to know what is a virtual machine. एक layman term में, how would you explain it to an interviewer or to your client who is coming from finance background, banking background? वहाँ का वो अपने आप का बड़ा giant है, ठीक है, काफी पढ़ा लिखा इंसान है, सब कुछ है, but technically he doesn't know much. You have to explain it to him. What is a virtual machine? So how will you do it to him? What is a virtual machine? Virtual machine is basically a server which we can create on demand, irrespective of any dedicated hardware required. We can create anytime, we can delete anytime, we can utilize for some time and then discontinue, irrespective of the hardware required. I mean, from the cloud services, instead of purchasing hardware servers and racks. Right. So और थोड़ा सा अगर इसको एकदम सिंप्लीफाई करना है तो नथिंग, योर वर्चुअल मशीन इज योर कंप्यूटर. जो कंप्यूटर हम लोग यहाँ पर लैपटॉप लेकर बैठे हैं फिजिकली, उसका एक वर्चुअल मोड, दैट्स ऑल, कि किसी और के हार्डवेयर पे कहीं पर होगा जिसको हम रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज अ वर्चुअल मशीन, हाईली So अवेलेबल basically, मशीन. it's typically an image or what? You can say Not it as exactly. image. Image is a different concept. This is complete machine. Okay. This is just not hosted at your own hardware. यहाँ पर आपके मशीन पे like you, if you have a laptop or a PC or something, that means that you have that machine, a physical machine with you. उसमें पानी गिर सकता है, वो आपके हाथ से चोरी हो सकती है, वो गुम सकती है, उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है. That is a physical machine. You have something physically. वर्चुअल मशीन मतलब ये सारी चीजें हैं बट किसी और के पास है, उसके ऊपर आपने सब वर्चुअली बना रखा है और आप उसको एक्सेस करते हो. राइट. सो इट इज योर कंप्यूटर, बेसिकली अ कंप्यूटर, बट जो है ये वर्चुअल है, फिजिकल की जगह ये वर्चुअल चीज है, which you can access from anytime anywhere. Yes, that is also correct. ठीक है. So the virtual machine we will be discussing now. Virtual machine, how can we access a virtual machine on Azure portal? Now we are just talking specifically about Azure. ठीक है, तो ये Azure Bastion जो है ये सिर्फ Azure पे ही है, ये AWS पे, GCP पे काम नहीं आएगा. ठीक है. So we'll be reading about this. Before that, let me quickly read few details from here and then we'll go to portal. Guys, if you think I'm going too fast, stop me, let me know, we can go slower. If you think you are not getting anything, ask me, we will repeat. Compute is one of the most important services, तो बिना compute के आपका काम नहीं चलने वाला है. And guys, trust me on this that I do not say this for everything. मतलब कि जिन चीजों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि this is important, so those are important. ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज को बस exaggerate करके ताकि आप लोग ध्यान दो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ. There are few things which are not important and I'll tell you frankly about them. कि it is good to know. आपको पता होगा तो ठीक है, अच्छा वेटेज होगा, बट नहीं पता होगा तो इंटरव्यू रिजेक्शन नहीं होने वाला है उस पर. बट कंप्यूटर इज समथिंग कोर, मतलब आपका काम ही होगा. इवन इफ यू गो टू डिप्लॉयमेंट तो आधे से ज्यादा आपका काम ही होगा कि वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते रहो, वही काम होगा आप लोगों का. सो प्लीज फोकस ऑन दिस एंड लेट मी नो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके, so I hope you guys did understand what is a VM as of now. These are the virtual machines status we have. It's किस तरह के स्टेटस होते हैं? क्रिएटिंग, रनिंग, स्टॉप्ड, डीएलोकेटेड. इनमें डिफरेंस क्या है ये सब हम देखेंगे एक बार, अच्छे से डिटेल में देखेंगे. ठीक है.
but I hope you are getting it. In difference, this was asked in an interview. I am not sure किसको इरफान भाई, was it asked to you? No, bhai. नहीं, बट किसी को पूछा था, मुझको अच्छे से याद है कि वीएम के स्टेटस क्या क्या होते हैं. सो दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, यू कैन कीप दिस इन योर माइंड कि क्या क्या स्टेटस होते हैं. आई होप दिस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. क्रिएटिंग से क्या मतलब होगा आपको पता ही है. आई मीन इवन इफ यू डोंट नो Azure, you don't know AWS, you are not a technical person, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएटिंग का क्या मतलब होता है, रनिंग का क्या मतलब होता है, स्टॉप का क्या मतलब होता है, राइट? हाँ, स्टॉप डीएलोकेटेड और स्टॉप का डिफरेंस जो है थोड़ा सा टेक्निकल है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट क्रिएटिंग, रनिंग, स्टॉप बहुत बेसिक चीज है. यू विल अंडरस्टैंड. विच पार्ट ऑफ Azure डू यू नॉट लाइक? ठीक है, ये हम बाद में देखने वाले हैं, दैट्स फाइन. ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन था. वर्क अराउंड टू resize disk, we'll see this later. VM is not part of AV set, this is, we'll see that later. VM size should be based on, ये भी हम बाद में देखते हैं. How Azure Bastion, we'll see later. Redeploy, ये सारे ट्रबल शूटिंग वाले ये टास्क है, we'll see them later. Scale up, we'll see later. VM skill set, we'll see later. Proximity placement group बाद में देखेंगे. ठीक है. So I think we can go to portal and we can start creating a virtual machine and start on the virtual machine का ये जो पूरा लेफ्ट वाला मेन्यू है, इस पे हम देख सकते हैं. Guys, I just need a minute. There's someone at my door, I guess. Meanwhile, I am leaving you with this. Please go through the topics which we have covered yet. If you have any questions, let me know. Availability set, availability zone, VNet, जो कुछ भी हो, because वो सब कुछ अब हम यूज करने वाले हैं while creating machine. और तब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को यही नहीं समझ में आएगा, right? So do not do that. I'm giving it 2 or 3 minutes. I'll be back and I'll let you know. Meanwhile, please think about these topics. Yes, guys, I'm back. Do you have any questions? Did you guys go through the old topics? Before I start compute, I want to make sure that you guys are clear with the topics which we have covered. Akib bhai, any doubt do you have? No, sir. Nothing. Henty, I suppose it is clear still. Do you have any doubts? Henty, can you hear me? Yes, yes, clear. Clear. Irfan, कोई doubt है भाई आपको? All clear. Juhi, what about you? VNet, or yesterday we were discussing about VNet and Cider. Are you guys clear with that? Khalid, what about you? Khalid, can you hear me? Actually, due to some reason, I did not attend the call yesterday. Okay. What about other than yesterday? Any other topic which you're not clear with, or do you have any doubts, anything other than yesterday?
Miranda, Jafar, what about you guys? Miranda, is it clear for you, or do you have any doubts? Actually, Soil, I I have, but the thing is, like, while training, actually, I'm logged in as well. So definitely, I'm just going to go through it. If there's anything, I'll be just messaging or pinging you for this. Sure, guys, please Do you do that. think? I understand we all have office and everything, and maybe some of you are working and attending the lectures at the same time. So I understand that it happens. But please make sure you watch the videos, and if you have any doubts, उसी दिन clear कर लो, because वो momentum में clear हो जाएगा ना, then it will help you. Otherwise पीछे रह जाओगे तो फिर आगे वाले topics नहीं समझ में आएंगे. I understand वो होने ही वाला है कि इसी में सब कुछ समझ जाए, इसी कॉल पे नहीं होगा. In fact, I have been telling you the same thing. ऐसे होगा ही नहीं कि इसी सेशन में इसी कॉल पे सब कुछ समझ जाओ आप. So go back and watch those videos, try to implement it, and then it will help you. I hope about others. Is it clear? I think Yogesh भाई के लिए clear है. Yogesh messages, he checks the doubts, so I think it's clear for him. Sumaya, Sana, what about you guys? Clear for you guys, okay. Yes, it's clear. Right. Riyaz, Ramesh, if you guys have any doubt, you could message me and let me know. Okay, let's proceed with compute then. Just wanted to make sure that everything is clear before we go there. So compute में जो major service which we will be learning and which we will be using is virtual machine. Okay, so let's start creating a virtual machine. If you guys want, you can create one with me, or look at the steps and you can create it later. So I click here and I click on Azure Virtual Machine. Sorry. Azure Virtual Machine with preset configuration. We'll see this later. Azure Arc Virtual Machine, we will not even see this. And if you want to see it, I'll show it to you once. Azure VM Solution Virtual Machine, not required for you to see it. ठीक है, फोकस हम लोगों का इसी पे होगा. But still, if you guys want, later I can show it to you. एक practical सबका मैं बता सकता हूँ. But questions आपके इस पे होंगे, काम आप लोगों का इस पे होगा. So focus on this one, the first one. So you can do it from here. You can select here. Ultimately यहीं पर आने वाले हो आप, कहीं से भी कर लो. ठीक है. I click on okay. I hope you guys have seen that video जहां पर मैंने आप लोगों को operating system install करके बताया है from scratch. Do you guys remember that video जहां पर हमने एक scratch से operating system install किया था? Yes. Right. So who could tell me that what is the requirement to install an operating system? What do I need to install an operating system? I have my hardware वगैरह, laptop वगैरह सब कुछ आ गया है. What do I require to install an operating system? Storage, disk. That is there in my hard disk. I said my laptop hardware आ गया मेरा सब कुछ. The OS भाई. OS किस फॉर्म में आएगा? ठीक है, आंसर इज करेक्ट. I want to install OS. How do I do that? क्या क्या तरीके हैं? मल्टीपल तरीके हैं. क्या क्या तरीके हैं? Who could tell me? Image of an OS which can be used. Right, image एक तरीका है. What do you call that? Image को क्या बोलते हैं? उस image को क्या बोलते हो आप लोग? ISO image. ISO image, right. What is the other way? Though we will be using ISO image. बाकी ऐसे ही पूछ रहा हूँ questions में, just to see your understanding. Yes. और क्या तरीके हैं? Legacy तरीके जिससे हम operating system install करते थे. अभी भी कई बार करते हैं by the way. by CDA, USB. Perfect. CD से हो सकता है, USB से हो सकता है. But now tell Portable me guys, devices. right, portable devices से हो सकता है. Floppy drive से नहीं होता है, बाकी सबसे हो ही जाता है. Floppy drive काफी छोटा, और अब तो use floppy drive का concept ही चला गया. ठीक है. So now you tell me guys that we have a virtual machine. Is it possible for me to insert a CD or a pen drive No. on a virtual machine? No. तो virtual machine के लिए हम ISO use करेंगे. ISO is nothing, उसी CD का virtual form जो है ना, ISO image होता है. ठीक है, और उसी को हम Okay. इमेज बोलते हैं. सो दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड. उसमें सारे फाइल्स होते हैं, रिक्वायर्ड फाइल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए. ठीक है. सो वी आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन हियर गाइस. वर्चुअल मशीन में ये सारे डिटेल्स है. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सब्सक्रिप्शन, किसी को कोई डाउट है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एंड व्हाई डिड आई सिलेक्ट दिस वन, एंड ये क्यों किया, ये क्यों कर रहा हूँ, या ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आएगी कि कौन सा सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना है? ये सारे क्वेश्चन में रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन. एनीवन हैज एनी डाउट? No भाई. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. सब्सक्रिप्शन कौन सा सिलेक्ट करोगे, ये आपके पास आ जाएगी इन्फॉर्मेशन आपके टिकट में. नया बनाना है अगर, तो वो टिकट में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. कौन सा क्यों कर रहे हो, वो सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. रिसोर्स ग्रुप गाइस,
एनीवन हैज एनी क्वेश्चन दैट कौन सा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, किसमें ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी आपके पास? एनीवन हैज एनी डाउट? कि why am I selecting Jafar's resource group and not Vishal resource group? Why am I selecting this resource group and not this resource group? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आप लोगों को? क्लाइंट से। एग्जैक्टली क्लाइंट से Ticket मिलेगी, में। आपके सर्विस नाउ टिकट में मिल जाएगी, आपकी लो लेवल डायग्राम में मिल जाएगी। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप, वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप, व्हाट लेवल ऑफ एक्सेस शुड यू हैव एंड वेयर? आई एम सेइंग कि लो लेवल डायग्राम में आता है आपको दैट अंडर MSDN प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन create 2 new resource group, 4 virtual network, 8 subnets and 16 machines। इस तरह की एक रिक्वेस्ट आती है आपको, एक छोटा प्रोजेक्ट आ गया कि एक हफ्ते में ये सब करके दे दो, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज दैट what access do you required and what level? Yes, you're correct, Sana, उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन हो सकता है, but yes, the concept is clear. Yes guys, what about you? किस लेवल का एक्सेस चाहिए, कहां पर चाहिए? रियाज? सब्सक्रिप्शन लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर। Yes, subscription level पे चाहिए। यस, एंड किस लेवल का एक्सेस? यस, ओनर इज करेक्ट, बट एक्सेस Yes, की owner। गाइस, एक्सेस का एक बात याद रख लो, एक्सेस आप कभी भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं दोगे, ठीक है। मतलब मुझको अगर एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक आपके पास सपोज की है जिससे 5-6 डोर सारे खुल जाते हैं, और एक है जिससे एक ही डोर खुलता है, राइट? तो मतलब दोनों भी की से मेरा काम हो जाएगा। मुझको डोर खोलना है नंबर 1, उसकी एक की है, और एक की है जैसे 1 2 3 4 5 सब खुल रहा है। तो अगर मुझको किसी को एक का एक्सेस देना, तो उसको मैं मास्टर की नहीं दूंगा। मास्टर की में उसका काम तो हो जाएगा, बट उसको अननेसेसरी एक्स्ट्रा एक्सेस मिल रहे हैं, राइट? तो मुझको यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है। तो मुझको ओनर देने की जरूरत है क्या? सब्सक्रिप्शन लेवल पे ओनर से हटके कोई और ये एक्सेस है जो मैं दे सकता हूँ? ओनर में एक्स्ट्रा राइट जा रहा है उसके पास। यस, यू आर करेक्ट सना। कंट्रीब्यूटर देंगे हम। परफेक्ट, कंट्रीब्यूटर दे सकते हो आप, ठीक। कोई भी ऐसा रोल जिससे वो एडिट कर पाए, मतलब ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती है। ये भी आपके पास बहुत स्पेसिफिकली आएगा दैट दीज यूजर्स, दिस पंच ऑफ यूजर्स, ये 5 यूजर्स जो है ये हमारे मैनेजर है, ये ओनर्स होने चाहिए। ये 6 यूजर्स असिस्टेंट मैनेजर है, ये कंट्रीब्यूटर होने चाहिए। ये 7 यूजर्स टेक लीड्स है, ये इनके पास ये एक्सेस होना चाहिए। सारा इन्फॉर्मेशन आपको आ जाता है टिकट में, डोंट वरी अबाउट इट। वहां पर आपको अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, बट लॉजिक एटलीस्ट समझ में आना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं इसको बार बार इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज व्हेन यू गो टू वर्क एंड व्हेन यू गो टू इंटरव्यू, वहां पर आपको ये नहीं भी ज्यादा ये आता है, यू कैन टेल इट इजीली कि भाई मेरे पास जो टिकट आता था, आई यूज्ड टू गेट अ टिकट विद एन नंबर ऑफ यूजर नेम्स, और उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आती थी, या तो लो लेवल डायग्राम कि इतने यूजर्स आपको बनाने हैं। वेयर विल यू क्रिएट द यूजर्स बाय द वे? Azure Active Directory। Azure Active Directory, करेक्ट। Azure Active Directory में आप अपने यूजर्स बना सकते हो, और वहीं से आपको ये मिल जाएगा, यस AZAD करेक्ट। वहीं से आपको ये मिल जाएगा, ये मैनेजर है, ये ऐसा है, इसको इस सब्सक्रिप्शन पे इस लेवल का एक्सेस चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। बट स्टिल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी मैं ये भी नहीं बोल सकते हो आपके मेरा काम तो सिर्फ ब्लाइंडली ये था कि देखकर कॉपी पेस्ट करना, ये भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी एक होनी चाहिए, राइट? हेंस वी आर डिस्कसिंग दैट। सो कंट्रीब्यूटर एक्सेस शुड बी फाइन, एंड रिसोर्स ग्रुप भी जो है आ जाएगा कि कौन सा रिसोर्स ग्रुप कहाँ पर ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देन वर्चुअल मशीन नेम, ये नाम कहाँ से आएगा आपके पास? क्लाइंट से। एग्जैक्टली लो लेवल डायग्राम में आपके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आई विल ट्राई टू शेयर वन लो लेवल डायग्राम विथ यू गाइस, मतलब आई एम श्योर आई डोंट इवन हैव टू शेयर इट विथ यू, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, राइट? कि एक रिक्वेस्ट कैसे आता है, आप जिस भी फील्ड में जहां पर भी जैसे भी काम कर रहे हो, बी इट सर्विस डेस्क, एप्लीकेशन सपोर्ट, नेटवर्किंग, स्टोरेज, बैकएंड, विंडोज, आप जो भी हो जहां पर भी हो काम कर रहे हो, आपको कोई ना कोई टिकट आता होगा, राइट? उसमें कितने डिटेल में इंफॉर्मेशन आती है, सेम उसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी आएगी, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस, नाम वहां से आ जाएगा, तो आई होप दिस यहाँ तक क्लियर है, दिस सेक्शन इज क्लियर, प्रोजेक्ट डिटेल वाला सेक्शन क्लियर हो गया। इंस्टेंस मतलब क्या होता है? आपका वर्चुअल मशीन या जो भी रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं वो, इसमें वर्चुअल मशीन नेम हमने जस्ट एक्सप्लेन कर लिया कि किस तरह से आता है,
वो कोई यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह का नाम रखते हैं, एग्जांपल कोई भी नाम हो, सपोज एक पीपल सॉफ्ट वाला एप्लीकेशन है ना, तो इस तरह का कुछ नाम रखेंगे वो, पीपीएल वगैरह, ऐसे जो भी नाम उनका, जो भी नेमिंग कन्वेंशन होगा ना, वो रखेगा। आई कैन शेयर अ डॉक्यूमेंट विथ यू गाइस, या फिर आप अपने अपने एनवायरनमेंट में जाकर देखो, आप सबको एक डॉक्यूमेंट मिल ही जाएगा कि आपके यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन क्या फॉलो किया जाता है। ठीक है। नाउ रीजन, इस रीजन किस बेस पे सिलेक्ट होता है आपको? तो अगेन आप लोग कैसे सेलेक्ट करोगे रीजन? व्हाइल डिप्लॉइंग आप लोगों को कहाँ मिलेगी रीजन की इन्फॉर्मेशन? वेयर विल यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन गाइस? सर्विस नोट टिकट या LLV. Exactly. But what is the logic behind it? What are the criteria behind selecting a region? Who could tell me? Low latency compliances and as per the requirement, like if you need like HA or Right. So who could explain me low latency, compliance and features? Who could explain this to me? थोड़ा सा elaborate. Miranda or Juhi, one of you could. Low latency, compliance and features. These are the factors I will consider while selecting a region. But could you explain them? What exactly I mean when I say compliance? Joey, could you explain compliance? Compliance is basically the securities or the laws that we have to follow in that particular region. Right. तो एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई सॉरी फाइनेंशियल ऐप है, तो उसमें आरबीआई जो है कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप इंडिया के बाहर चले अपना डेटा रखो। तो कोई ऐसा एप्लीकेशन जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, फाइनेंशियल ऐप है, तो that app is bound to have the region within India. That is compliance. Feature. Who could explain feature? Miranda, feature. What do you understand by region? में क्या feature हो सकता है ऐसा? Could you give me one example? If you're speaking, we can't hear you. Yes, Sana, you're correct. That is one of the features. Anyone else? Yogesh bhai, could you give me an example of a feature? कि ऐसा क्या फीचर है जो मुझको एक रीजन में मिल सकता है, एक नहीं? जो हमने अब डिस्कस करते हैं वो भी बता सकते हो आप। Feature, I think availability zone could be Perfect. type of it. कि अगर मेरा रिक्वायरमेंट हो सके, यस, HA राइट इरफान, हाई अवेलेबिलिटी जोन दोनों एक ही चीज हो गई, वो एक फीचर हो सकता है। बस गाइस रिमेंबर, दिस इज नॉट द ओनली थिंग। ये एक ही फीचर नहीं है, बहुत फीचर्स है जो किसी रीजन में है, किसी में नहीं है, वो हम आने के बाद देखेंगे। दिस इज एन एग्जांपल एंड यू कुड यूज दिस इन इंटरव्यू, बट दिस इज नॉट द ओनली डिफरेंस। ये एक ही बेंचमार्क नहीं है। सो वी आर डन विद कंप्लायंस, वी आर डन विद फीचर, नाउ लेटेंसी। हु कुड एक्सप्लेन लेटेंसी? रियाज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटेंसी? Irfan, is that the answer for latency? Downtime? Is that your answer for latency? Yes, can you hear me? Ramesh, latency? Who is available, guys? Anyone? Latency? I hope join करके भाग नहीं जा रहे हो यार आप लोग। हाँ, कोई कॉलेज का अटेंडेंस वाला क्लास नहीं है। If someone is not available, that's okay not to join. Hindi. Low down time, the time taken by the packets to transfer. Latency is delay. Low latency means minimum delay. Fine. Could you give me an example कि latency का क्या मतलब हो सकता है? फिर भी थोड़ा सा elaborate करो तो। Oh, that's okay. I'll do it 3 minutes. बाकी है सिर्फ इस सेशन के लिए। Latency is something कि आपके spectators कहाँ पर है? अगर कोई आपका नेटफ्लिक्स जैसा ये है, तो नेटफ्लिक्स में लेट्स से कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इंडिया में इसको वॉच कर रहे हो, और मैंने पूरा का पूरा डेटा अपना ऑस्ट्रेलिया में रखा है, तो आप हाई डेफिनेशन पे वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो। डेटा कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया से इंडिया तक। अननेसेसरी बैंडविड्थ, अननेसेसरी डिले, ये सारी चीजें हैं। तो व्हाट वुड आई प्रेफर कि मेरे अगर इंडियन यूजर्स है ना,
तो मैं अपना डेटा इंडिया में कहीं पर रखूँ, इंडिया में 2-4 जगह ऐसे रखूँ जहां से हर जगह में केटर कर पाऊँ, जिससे लेटेंसी कम हो और बैंडविड्थ कम लगे, दैट इज लेटेंसी। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स जिसके बेस पे एक आर्किटेक्ट टीम जो है किसी रीजन को सेलेक्ट करती है। और प्राइसेस वगैरह भी बहुत फर्क पड़ता है गाइस, यस लेट मी शो इट टू यू वंस। एंड ऑब्वियसली दैट इज अ फैक्टर, मतलब प्राइस बड़ी कंपनी हो, छोटी सा ये हो, कुछ भी हो, प्राइस डज अफेक्ट एवरीवन। ऐसा होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं क्या? Why basically latency is related to the region which we select or which the client asks for. So we have to select the closest region. यस, क्लोजेस्ट इसीलिए ताकि लेटेंसी ना हो। तो जहां पर भी आपके स्पेक्टेटर्स है या आपके यूजर्स है वहां से। नाउ गाइस लेट मी शो इट टू यू, सॉरी। एंड कॉस्ट जो है ना गाइस, बड़ी से बड़ी कंपनी कोई भी हो, हाँ ये डजंट मीन कि कॉस्ट के लिए वो कुछ भी उठा लेंगे, बट अगर उनका सेम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है ना, तो कॉस्ट हमेशा प्रायोरिटी होगी। सिक्योरिटी होगी, उसके बाद हमेशा कॉस्ट ही होगा, ठीक है। सो दिस वर्चुअल मशीन गाइस, इफ आई एम लुकिंग फॉर दिस वर्चुअल मशीन, आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस, हाँ इंडियन रुपीज में मुझको मिल सकता है क्या? हियर इट इज, इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज उसको कन्वर्ट करते बैठोगे आप फिर, ठीक है। वेस्ट यूएस में अगर मैं ये मशीन ले रहा हूँ, कौन सी? विंडोज मशीन स्टैंडर्ड, ये जो भी इसका साइज है, ये इसका सीपीयूज है, इसका रैम है, इसको हम आराम से डिस्कस करने वाले हैं सब। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 11,680, दिस इज द टोटल कॉस्ट। अभी एक महीने के लिए किसी के लिए भी छोड़ दो, हम कुछ नहीं चेंज कर रहे, सारी चीजें वैसे ही रखेंगे। वेस्ट यूएस के हम सेंट्रल यूएस ले रहे हैं। दिख रहा है प्राइस में चेंज गाइस? Here, can you see the changes? This is about to finish guys, I will start without any break. The moment it is done, I'll start it. You see, स्विट्जरलैंड में लेना बेवकूफी होगी, सेम मशीन। और यहाँ पर जहां 100 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है, नाउ इमेजिन ये 1000 मशीन्स हो गए, हर महीने की बिलिंग होगी। ये एक वर्चुअल मशीन का सिर्फ एक मंथ का बिलिंग बता रहा है, 730 आवर्स का, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट डिफरेंस होता है। ईस्ट यूएस कितना कम हो रहा है, राइट? So let me stop this guys and I'll start it with the same link immediately.